Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 18th of December. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. The analysis of the news will cater all the aspirant who will be appearing for the Civil Services examination, State Public Service Commission examination, and one-day examination conducted by various state and union agencies. So through this video session, we'll see the important news that is relevant for the examination. Before I proceed further, I would just like to highlight on the point that for UPSC CSC aspirant, the examination is scheduled for 26th of May 2024, and I hope all of you are doing well, preparing with your full best efforts and practicing a good number of MCQs. If you want to have more good quality MCQs, we have a dedicated program, that is All India Test Series program named Nishchay. Under this program, we are providing 4900 plus questions, video discussions, demo test, and free magazines for content enrichment. So this is a umbrella package for all the aspirants who are aiming for UPSC Prelims 2024. For instant registration, you can use this QR code, or even you can reach out to our website for further details. Now I'll move ahead with the news highlights and then proceed for the detailed analysis of the news one by one. And starting with the news highlights of the day, that is European Union has come up with Artificial Intelligence Act. We'll see the detail to this. This is from the text and context page of the Hindu. Second important news talks about the global coal demand that is about to decrease by 2.3% by 2026. This is a report by IA. We'll see the detail to this. The third important news talks about the Bhutan in India that is coming up with the development, the infrastructure development across the Assam border. The second last important news talks about the indigenous part of the building that is taking place at Unit 4 Karapar nuclear plant. We'll see detail to this as well. And we'll be concluding the session with editorial that talks about the forest right, something important that has been carved out through this article, which will give you a deep insight about the forest right and how it need to be carried forward. Now let's get started with a detailed analysis of the news one by one. So the first important news is about the European Union Artificial Intelligence Act. I have already made a discussion how the European Union has come up with the AI Act, that is Artificial Intelligence Act. ये पहली comprehensive legislation है पूरे वर्ल्ड में जो किसी भी एक कंट्री की तरफ से लाई गई है. Something very important that call for a regulation of artificial intelligence across the globe. Specifically अभी ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के रीजन में हाईलाइट करें. Now, what is the aim and objective? See, the reason they are coming with, we have seen the challenges that is coming with the AI. AI की अगर बात करें जिस तरह से challenges अभी आई हैं आने वाले टाइम में और जो आएंगी उस चीज़ को कैटर करने के लिए बेसिकली एड्रेस करती है. We have seen how the deep fake is actually working. So this is all under the ambit of AI, right? तो ये significant legislation है जो कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको रेगुलेट करेंगी यूरोपियन यूनियन में. दिस पर्टिकुलर एक्ट सीक्स टू बैलेंस बिटवीन फोस्टरिंग द इनोवेशन, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो. इट शुड बी कॉल्ड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट एंड नॉट फॉर द मैल फंक्शनिंग, समथिंग विच इज़ नॉट फॉर द माइंड काइंड. जो डेक्रीमेंटल है सोसाइटी के लिए उस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करने की कोशिश की जाएगी. The objective of this act is to create a regulatory framework for AI technology जो कि mitigate करेगी AI से related system के issues को, the problem which is existing in the AI system, clear establishment of the guideline for developers. See, for any part, the first we have a developer version, right? Developer version के बाद जब उसमें testing होती है, then we have a final version. तो users, regulator और developers के लिए एक regulation बनाई गई है under the AI Act. The aim is to ensure the responsible use of AI for protecting the fundamental right for an individual fundamental right and promoting the transparency in the AI application. So definitely the act that has been brought in by European Union will definitely be taken into consideration by India also. And still time being, we do not have any proper legislation that actually regulate AI. But इस तरह के legislation से India काफी चीजों को सीख सकती है. Now, strengthening the AI Act,
द एम इज टू हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दिस एआई ऐप. जो लेजिस्लेशन है वो एआई की एप्लीकेशन के साथ साथ उसके जो रिस्क हैं, how the risk is there. I mean, see, from the risk that is high to low, the things will be taken into consideration. I'll tell you the detail to this as well through a picture in a while. Now the approach enable a tailored regulation जो कि खास करके जो यूरोपियन यूनियन की जो ज़रूरतें हैं उसको कैटर करेगी. The stringent rule call for regulating entire European Union. The act prohibit the EU committing preventing the part of misuse of AI technology. किसी भी तरह की misuse, whether it is from the economic perspective, from science and technology perspective, from research and development perspective, it will not be allowed. Now, the proposed legislation has explicitly banned AI, including the government social credit store जो scoring है उसको पूरी तरह से इस तरह की चीज़ें allowed नहीं होगी. Predictive policy will not be allowed. Manipulating applications like emotional recognition system for the work or education is completely prohibited under the EU legislation. Now, one thing that is important for you to take a note of is about the details that is coming EU Artificial Intelligence Act. That is, there are four category that has been there. First is the minimal risk, then we have limited risk, high risk, and unacceptable risk. So under which certain part will be completely prohibited. There's a conformity assessment that will take place. Limited risk में transparency applications देखी जाएंगी, and in the minimal risk there will be no application as such. Now, limitations की अगर बात करें इस particular AU Act की, I mean, if you look at the EU, they have actually come up with the AI Act. तो इस Act की क्या limitations हो सकती हैं? This application evolved with the nature and technology criticism है that it may face the defining the category, जो categorizations की गई हैं, that is also not well defined. It need to be well carved out. Now, the dynamics may hinder the establishment of clear boundaries between the different risks, creating uncertainties in regular implementation. Additionally, अगर compliances की बात करें, EU Act may impose significant burden to smaller business and startup. Striking the right balance between the regulation and fostering the innovation is crucial in criticizing the arguing of AU Act, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो strict controls हैं वो EU के पास होंगी. Now the things need to also be taken into consideration that some innovation can also be allowed. So there need to be some major changes, which will be proposed post amendment if EU is actually looking forward with it. Now, potential implication of Act की अगर बात करें, this is poised to be have a global shape. अगर MiCA, I think most of you must be aware of MiCA. This actually regulate the cryptocurrency. Cryptocurrencies में MiCA की यूज़ की जाती है. उसी तरह से EU की जो फ्रेमवर्क है वो शेप करेगी AI के डेवलपमेंट के, जो कि एक्चुअल MiCA रेगुलेशंस को क्रिप्टो में अलाउ करती है. Now, by prioritizing the ethical consideration, the fundamental right EU will also contribute in the establishment of global norm for AI development. So the norms that will be set will be ensured at the global level, and even it is not hindering with the fundamental right of an individual. It should encourage the collaborations between the regulatory authorities, fostering the unified AI regulation. So this is how the thing will actually function. And to a nutshell, EU legislation that has brought in for the first time by any country, I personally feel that this will have a remarkable implications and a watershed movement for the AI regulations. Now, the administration side की अगर बात करें, EU में काफ़ी significant step forward technologies के ethical side को consider किया है, और EU Act है जो potential shape करेगी global norms को. As I've told you, globally ये norms को shape करने में मदद करेगी, collaborate करेगी AI technologies के साथ, and even the challenges that is existing across the border. So I have given you the detailed part how the EU regulation which has been brought in by the European Union call for more innovations and more regulatory through transparency in the act. Now moving ahead, IEA की एनुअल कोल मार्केट रिपोर्ट आई है, जिसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उन्होंने बताया है कि जो कोल की एक्चुअल डिमांड है that is expected to decline by 2024. What percentage they have actually highlighted? We'll see detail to that. सो रिपोर्ट में बताया गया है द कोल कंजप्शन है वो डिक्रीज करेगी, एंड द पार्ट विल बी डिक्रीज बाय 2.4%. दिस इज व्हाट हैज बीन द एंटिसिपेशन. अराउंड 40% ग्लोबल कार्बन इमिशंस जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम कोल, वाइल ऑयल एंड गैस कंट्रीब्यूट रिमेनिंग परसेंटेज. ये भी इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, बट द सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम कोल. नाउ रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली नोट किया है दैट द रोज इन द 1.5
4 डिग्री मेनली ड्यू टू द एनर्जी डिमांड. जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ लार्जर एक्सटेंट. इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, इट इज 8%, फॉर चाइना इट इज 5% ना. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन टेक नोट ऑफ. कोल और इसकी यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ पे किस यूजेस में एक्चुअल कोल की ज़रूरतें पड़ी हैं. द कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, राइट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है. इवन फॉर सीमेंट प्रोडक्शन, इफ यू लुक एट द सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट्स फैक्ट्री, दिस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, and the part it's create, it has a lot of CO2 emissions into the environment, right, which has a detrimental effect. Despite the fact global consumption is expected to remain below 8 billion through 2026, this is what the IEA has specifically noted. Now, India, China, and Indonesia are the three largest producer of coal globally. So first you can rank them in the part of China, then we have India and Indonesia. तो ये कुछ countries हैं जो कि coal productions में rank करती हैं. The three countries now account for 70% of the total coal productions. Now, declining consumptions, as I've said, the report has specifically highlighting on this fact. So the report says that the coal consumption will be declined. The most advanced economy by 2020, including the European Union and United States, 20% each. यूरोपियन यूनियन की तरफ से और अगर यूएस की बात करें, ये दोनों मिलकर 20% कंट्रीब्यूट करेंगे इन द टोटल डिक्लाइन. Now, US and EU more rely on the oil and gas, natural gases. इनकी जो क्लीन एनर्जी की तरफ an attitude shift हुई है, but it will take time, not only for India but for other country as well. But EU and European Union, I mean the part of US, they are actually looking forward with oil and natural gases. Now, instances, oil and natural gases account for 36% and 33% of the total energy productions in US. So this data is also important. You can use this in the mains examination. अब बता सकते हैं किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे एक्चुअल में यूटिलाइज किया. The global coal demand is projected to be decreased by 2.3%. Just to correct here, I have told 2.4, but exact is 2.3. ये decline देखी जाएगी by 2026 और ये significant पोर्शन होगी जहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट के आगे बढ़ने की तरफ मदद करेगी. वी हैव सीन ड्यूरिंग COP28 दिस वाज आल्सो टॉक्ड अबाउट फेजिंग आउट टुवर्ड्स द यूजिंग ऑफ कोल, बट इंडिया ने अभी इस फिलहाल के लिए इसे साइन नहीं किया बिकॉज वी हैव लॉट मोर अदर डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस एज वेल. Now, if you look at the data country wise, कहाँ पे decline देखी जा सकती है, this is a projection that has been made by the IEA. So this is the data graph. You can pause this video and check out the details from here. Now, recommendation और suggestions IEA की तरफ से IEA ने कहा है कि जो कोल मार्केट है, स्पेसिफिकली अपने रिपोर्ट में बताया है दैट कोल मार्केट नीड टू एक्सलरेट एंड फेज डाउन द अनबेटेड कोल पाउडर. जो पाउडर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए डेक्रीमेंटल है, उसे खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए. नेगोशिएशन शुड बी देयर विद द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना टू रेस्ट्रिक्ट एंड टारगेट द पार्ट ऑफ यूज ऑफ कोल. ये क्लाइमेट टॉक्स में इसके बारे में भी बातें हुई थी. इंडिया ने अभी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं की है. IEA has expectations to decline the coal demand premised by the change. I mean, जिस तरह से global climate change है, उस चीज को देखते हुए definitely it is always advisable to use less coal for the sustainable environment. Now, moving ahead, Bhutan has unveiled a plan for economic linkages with Assam. Bhutan के king ने recently बताया that they're coming up with a major project, और ये जो project होगी 1000 square kilometers की होगी with the borders, I mean the area bordering Assam region. This is a specific development in Bhutan itself, but in India in general, Assam will be the state that will be mutually benefited और इसके long term effect काफ़ी positive है. Now about the project, this project actually planned for an international city in the area which will be close to 1000 kilometer. Now Gelpu is a special area, इसे सारवी कहते हैं, will be a special administrative region में एक्चुअली इसे लोकेट किया गया है जो कि भूटान में और आसाम के डेवलपमेंट में बहुत हद तक मदद करेगी, राइट. सो दिस प्लेस एंड प्रोजेक्ट नेम इज अगेन इम्पोर्टेंट, इज गेलपू. नाउ दिस प्रोजेक्ट कॉल फॉर इंडियाज फर्स्ट भूटान रेलवे लाइन इन द गेलपू इन भूटान, और आसाम के रीजन में काफ़ी हद तक रेलवे कनेक्टिविटी और जो कनेक्टिविटी की इशूज़ है वो बहुत हद तक कैटर होगी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Now, if you look at the map here, I mean, this will make things more clear for you. So this is Bhutan here. This is Gelipu is the region, and we have Kokrajhar in Assam. So the connectivity will be there here. You can even draw this particular map if you're writing in mains. Those of you who are having optional PSI, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा relevant है.
Now, infrastructure development, as told you, जिस तरह से अगर भूटान की बात करें, भूटान was actually listed as the least developed country, right? Least developed countries में ये शुमार थी, जिसे least developed LDC भी countries भी कहते हैं, but they have made progress और इस list से recently ही भूटान को बाहर ले लिया गया है by the part of the country which actually recognizes it. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई मीन भूटान के लिए, जहाँ पे यूएन के इस लिस्ट से इसे बाहर रखा गया है. Now we have currently 45 countries that is under the LDC. Now, Bhutan has achieved exponential progress in its hydropower, right? इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें 20% जो उनकी जीडीपी है वो हाइड्रो पावर से आती है विच दे एक्चुअली गिव टू इंडिया, एंड दिस इन टर्न हैज़ अ बेटर क्वालिटी फॉर लाइफ इंक्लूडिंग एक्सेस टू basic services, improve health, education, and more industry and business opportunity with India as well. So definitely mutual benefit काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में, where you can see the substantial progress is up to 20% to their GDP. Now this is a good number and a classical example that also can be used in the mains paper. Now, Kakrapar 4 nuclear reactor attained criticality. This is again a milestone achievement for India. One of the largest indigenously built power plant, which is stationed at Gujarat near Surat, 80 किलोमीटर है सूरत से, और ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट. Now, this is a fourth unit of the Kakrapar atomic power plant, which is there. The fusion chain reactions होती हैं. This is again important. Sometimes one day examination में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. There were unit 3 and unit 4. That was actually 7,000 megawatt and heavy water reactors was built. Now, unit 3 की अगर बात करें, ये अगस्त में ही ऑपरेशनल कर दी गई थी 2023 को. Indigenously power reactor was built with the Nuclear Power Corporation of India Limited, and these reactors are pressurized with heavy water reactors that use natural uranium, fuel, and heavy water coolant to the moderators. Now, this reactor boosts India's nuclear capacity. अगर बात करें total capacity, that is projected to be achieved by 22,480 megawatt by 2031. इस तरह के factual information जो हैं prelims के लिए भी काफ़ी हद तक relevant है. Now, if you look at the data, this map, this will give you an idea कि किस तरह के कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, किस कैपेसिटी पे वो ऑपरेट कर रहे हैं. वी हैव इन राजस्थान, रामतभा, नरोवा इन उत्तर प्रदेश, काकरापार इन गुजरात, देन कलकपन्नम तमिलनाडु, कुन्नाकुलम इन तमिलनाडु, देन वी हैव कायजा इन कर्नाटका, और महाराष्ट्र में तारापुर. आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में, एक ऐसी स्टेट जिसमें 2 न्यूक्लियर प्लांट है, तो द करेक्ट आंसर विल बी तमिलनाडु. Now, moving ahead with the editorial for the day, we'll see how the forest right actually work in this part. Forest right के बारे में डिटेल में बात की गई है, right? So, historic injustice, we'll see. Colonial जो forest policies उसे देखेंगे. Forest Right Act क्या कहती है और conclusion. Now, December 2016 में राज्यसभा ने फर्स्ट अप्रूव किया था FRA, that is the Forest Right Act, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर्स को एक्ट प्रोवाइड करती है और एम्पावर करती है विद देयर राइट, एंड दिस वाज फाइनली पास्ड बाय द लोकसभा एज वेल. एक रिमार्केबल एक्ट थी जहाँ पे इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और सोशियो इन्वायरमेंटल लॉज के तौर पे इसे देखा गया था कि जो फॉरेस्ट की इनरोचमेंट हो रही है उसे बचने के लिए एक प्रॉपर रेजोल्यूशन, एंड इवन टू द पीपल, द dwellers which is actually there, the scheduled tribe, they were also given the recognitions, right? Simultaneously, it created more democratic and bottom-up approach. See, at the village level, there was no regulation as such. इस regulations की वजह से problem होती थी और dwellers को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था. The Forest Right Act 17 years के बाद भी अभी इसमें खामियां हैं. Definitely there is always a downside and negative to it, but we need to look where are the problem, right? Despite the instant government endeavor to look forward, फॉरेस्ट गवर्नेंस और प्रोग्रेस में अभी भी चीज़ें काफ़ी स्लो है. वी नीड टू पेस इट आउट, एंड बिफोर वी पेस इट आउट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. नाउ हिस्टोरिक इनजस्टिस की अगर बात करें, सी बिफोर कोलोनलिज्म व्हाट वाज देयर, जो कोलोनलिज्म हुई उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कस्टमरी राइट्स देखे गए थे, जहाँ पे हंटिंग राइट्स विद थिंग्स दैट वर एक्चुअली टेकिंग प्लेस, एंड कोलोनलिज्म हैज़ एक्चुअली डिस्ट्रप्टेड द ट्रेडिशन. 1887 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास की गई थी जहाँ पे कॉलोनियल टेक ओवर हुई फॉरेस्ट की, और इसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बहुत हद तक बैन भी किया गया. द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आल्सो.
और वो हार्वेस्ट करती थी एंड ट्रांसपोर्ट फॉर द मैक्सिमम टिम्बर एंड रेवेन्यू. नाउ the colonial law which was there, the colonialism which was actually there, were more into profit making, right? So they were more into profit making through their forest. They were never ever thinking that what will be the decremental effect. They were maximizing the uses of timber and creating more and more revenues. Now, colonial forest policies की अगर बात करें, this is imposed by the colonial forest that has a multiple forms. फर्स्ट में जो प्राइमरी टिम्बर थी उसे एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखा गया, बाद में उसके कल्टिवेशन को बैन किया गया. Now, second, the so-called survey, that is settlement for agriculture land, was incomplete and biased in favor of state. Third, forests were now a state property. colonial law में ही इसे state property declare किया गया था, इसलिए आज भी आप देखेंगे state forest की अगर बात करें, forest come under the state property, right? Fourth, has access to permitted local community and no right to manage the forest. Okay. Now, Forest Right Act, जिसे एक अगेन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट माना जाता है, स्पेसिफिकली फॉर एक्नॉलेजिंग दैट द colonial injustice which was there पोस्ट इंडिपेंडेंस उसे ख़त्म की गई. फॉरेस्ट राइट एक्ट कैटर करती है जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं उनको, स्पेसिफिकली उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अलाउ किया गया है. दे हैव बीन कस्टमरी बाउंड्रीज fostering the decentralized forest governance and community rights. Finally, the Act laid down the democratic procedures identifying where the wild conservation may be actually there और जो community rights हैं उनको cater करती. So it actually provide the rights to the minor forest produce and even sell of item which is listed by the state government. The right is affirmed by the Supreme Court जहाँ पे नियामगिरी केस में फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2022 और जो FCA की अमेंडमेंट थी 2023 में जो bypass करती है इस राइट को, state can still put place some consent mechanism. So power still rests with the state government, but this is to ensure that they favor the part of people residing in the forest or in the proximity area. Now to conclude the fact, Maharashtra, Odisha, अभी एक recently इन्होंने, छत्तीसगढ़ are also the state that recognizes the CFR substantially, right? उसके अलावा Maharashtra has enabled their activations of decolonization forest produce जो है खास करके शेड्यूल एरिया में with 1000 villages managing their own forest, right? And government is also looking forward for the proper mechanism जहाँ पे इसे और regulate किया जाए transparency के साथ. Without a shared understanding for the support and political, the bureaucrats, environmentalists and other FRAs, historically injustice will persist and governance will lack democracy, potentially for the community-led conservation, substantially livelihood will go unrealized. So this is how we need to cater. अगर जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्चुअली में पास की थी गवर्नमेंट ने, उसके और कोर एसेंस को इन्हांस करने की जरूरत है एंड इट शुड अल्टीमेटली प्रोवाइड द लाइवलीहुड ऑप्शंस टू द पीपल रेसिडिंग इन द प्रॉक्सिमिटी and also considering the fact that it should be sustainable environment that should be promoted to a large extent. Now moving ahead with the discussion for the yesterday question, that is for the Saturday questions. So first the correct option is B, right? मैंने आपसे पूछा था सेबी के बारे में किस तरह से चीजें हैं and other part that is there for the zero coupon principle. So the correct option here is the statement 1 and statement 3 is again correct. So you have to check what you have marked as a correct option, right? So this was regarding zero coupon, zero principle. For second question, the correct option is B. Here again the option of 2 is correct about the PACE mission. So check out what you have marked as a correct option. Today's MCQ for practice. The first question is about the Bharat Neo Car Assessment Program. Again very important for prelims. ये इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम जो कि कार क्रैश को चेक करती है, एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स. द कॉस्ट ऑफ कार ऑफ द असेसमेंट इज ब्रोन बाय द रेस्पेक्टिव व्हीकल मैन्युफैक्चरर. सो चेक आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क योर करेक्ट आंसर by writing the question number followed by your correct option in the comment section down below. Second is about the swarm drones. These are consist drone working coordinations to achieve the common objective. Multiple individuals swarm are autonomy engaged in this drone under the control of the central control room. So again the same process you have to follow. Question number followed by your correct option and write that in the comment section down below. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, programs, new admissions, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.